Hello friends, welcome to Competitors World. Competitors World को आपण मानको स्वागत. So in today's session we'll be discussing the Odisha history part. Okay. So first session is about Kalinga War. आज हमें Kalinga War विषय रे पढ़िबा and in the next session we'll be discussing the MCQs. Okay. So first theory टाको भलसे टे देखि दंतु. ए theory को बेस करके MCQ रे मु क्वेश्चन गुडा को फ्रेम करबी. सो जदि आम कलिंग वार विषय आज पढ़ुचे कलिंग वार विषय समस्ते किसी ना कि जानी थे. So it was a deadly war. Okay, it was a very much heartbreaking condition for the people of Kalinga. Why? Because in this war more than 1 lakh people were killed. 1 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ. ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 1,50,000 people were made captive. ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା. ଓକେ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା. And after the war thousands of people died due to starvation and diseases. Starvation माने होची भोकरे एवं विभिन्न रोगरे से माने मृत्युवरण कले. ओके, सो कलिंग वार जति हमें कलिंग विषय टिके पढ़िबा. सो Kalinga was a part of Magadha. Look at this. Here is Magadha. Okay. So Kalinga was the part of Magadha during the time of Nandas. Okay. So the Nanda dynasty used to rule the Magadha. Okay. When कौन हला तापरे when the Nandas were defeated by the Chandragupta Maurya. जेतेबेले नंद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा डिफिटेड हेले नंद साम्राज्य नंद डायनेस्टी. At that time the Kalinga became an independent state. Okay, Kalinga गोटे independent state हे गला. Okay, and जदि आमे कलिंग विषय टिके देखिबा. सो कलिंगर एक्सटेंशन केते थिला. ओके, सो आमे जानछे मौर्य डायनेस्टी टा चंद्रगुप्त मौर्य एस्टाब्लिश करथिले. जदि आमे मौर्य डायनेस्टी के देखिबा मौर्य डायनेस्टी केते रु केते बाट एक्सटेंशन थिला. सो देखंतु एठी जदि आमे देखिबा वेस्ट रे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ठू आरंभ होइकी को जाए जाइथिला ना बांग्लादेश जाए व्यापी थिला. आ एपटे साउथ रु पंजाब रु आरंभ होइकी से जाइथिला को जाए ना आंध्र प्रदेश एंड केरल. नॉर्थ रे पंजाब रु आरंभ होइकी आंध्र प्रदेश और केरल साउथ जाए जाइथिला. कंप्लीटली मौर्य एम्पायर वाज ऑक्युपाइड. ओके, सो एटी कोन थिला ना कलिंग. व्हेन द मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य defeated the Nanda king and occupied Magadha. Okay, here is the Magadha. So Magadha was called the heartland of Maurya dynasty. Maurya empire heartland को होतला Magadha को. आउ at that time the Pataliputra, here look at this Pataliputra. Pataliputra was made the capital of the Maurya dynasty. Okay, so this was all about Kalinga. तापर देखिबा जेतेबेले कोन हैला ना चंद्रगुप्त मौर्य विथ द हेल्प ऑफ चाणक्य का सहाय्य ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी एंड एस्टाब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर. सेतबेले तो मु कहिछि हार्टलैंड थिला मगध आउ कैपिटल थिला पाटलिपुत्र. अच्छा, आमे जति एई रीजन कथा देखिबा टिके खाली ब्रीफली सब जिंस कहि दोछि. एई जो रीजन टा अछि एई जो रीजन कथा देखिबा कोन ना गांधार आराक्सिया आउ जेड्रोसिया एई रीजन टा कोन हेतिला ना इन 303 BC. ओके, 303 BC कौन होता ना देयर वाज ए ट्रीटी बिटवीन सेल्यूकस निकोटर. हुआ सेल्यूकस निकोटर. सेल्यूकस निकोटर वाज द जनरल ऑफ किंग अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर का जनरल थे सेल्यूकस निकोटर. से कौन कले ना इन 303 BC देयर वाज ए ट्रीटी बिटवीन सेल्यूकस निकोटर and Seleucus Nicator ceded the significant northwest Indian territories. Okay, what are the territories? That is Arakosia, आउट अच्छी जेड्रोसिया, आउट अच्छी कौन ना यही सब रीजन को सेल्यूकस निकटर ऑक्युपाई कले. कौन पे ऑक्युपाई कले? बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य इन एक्सचेंज वांटेड देयर वाज ए मैरिटल अलायंस. ओके, सेल्यूकस निकोटर को डॉटर को चंद्रगुप्त मौर्य विवाह करने ପାଇଁ चाहूले. सो देयर वाज मैरिटल अलायंस बिटवीन सेल्यूकस निकोटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, एंड जदि चंद्रगुप्त मौर्य ता फल कौन है देयर वाज ए रिलेशन बिटवीन द ग्रीको इंडियन रिलेशन वाज आल्सो
strengthened. Okay, तांका भितर relation टा strengthened थिला. And after that Seleucus ceded areas in modern Afghanistan and Pakistan including Arakosia, ताको कहते खंडाधार जेट्रोसिया, जोटा कहते बालूचिस्तान कहते है, तर काबुल वैली, ये सब स्थान को ऑक्युपाई करने गले किए सेल्यूकस निकोटर. सो आमु कहि दुटा रीजन, गोटे होची मैरिटल अलायंस आ गोटे होची वार एलिफेंट. इन एक्सचेंज चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड सेल्यूकस निकोटर 500 इंडियन एलिफेंट्स. ओके, सेल्यूकस निकोटर को चंद्रगुप्त मौर्य से मैरिटल अलायंस पर 500 देइथिले कोन एलिफेंट देइथिले. ओके, 500 एलिफेंट. जेतोले आंक भितरे जेतोले ये जो हैला ग्रीको इंडियन रिलेशन टा स्ट्रेंथन हैला, तापर कोन हैला ना मौर्य रो गोटे गुड रिलेशनशिप एस्टाब्लिश हैला, पीस एंड स्टेबिलिटी डेवलप कला. ओके, सो कल्चरल एक्सचेंज मध्य हे गला. ओके, सो देखिबा वर्तमान कलिंग वार विषय टिके डिटेल्स रे देखिबा. सो देखंतु वर्तमान ए जो मैप टा देखौची एटा थिला कंप्लीटली मौर्य एम्पायर. ए जो पार्ट टा अछि हैला, ए जोटा अछि कहली जेट्रोसिया, आराकोसिया, लुक एट दिस जेट्रोसिया, आराकोसिया, पारोपामिसाइड जोटा अछि एरिया दैट वाज ऑक्युपाइड बाय द सेल्यूकस निकोटर. एंड एठी जो देखि पार्थ गोटे अछि जगह अछि दैट इज दक्षिण पथ. ओके, हियर इज कलिंग, आवर कलिंग. सो एटा होची मगध, हियर इज पाटलिपुत्र, एटा होची दक्षिण पथ. सो व्हाई दक्षिण पथ वाज इंपोर्टेंट? बिकॉज major commercial highway that facilitated trade and cultural exchange between north and southern India, that is ए जो दक्षिण पथ अच्छी. सो एटा गोटे रिजन थिला जहाँ फल कि मेजर कमर्शियल एक्टिविटीज एपट दे करा होतला. दैट रूट वाज क्रुशियल फॉर मौर्यन इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. किंतु मझिरे किए रही ना कलिंग. सो दैट वाज द मेजर फैक्टर बिकॉज कलिंग वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. ओके, सो आमे जदि कहवा कलिंग विषय, कलिंग वाज ए कोस्टल स्टेट फुल ऑफ ट्रेजर्स. ओके, से टाइम रे कलिंग बहुत धन संपत्ति रे परिपूर्ण थिला. द पीपल ऑफ कलिंग वर वेरी मच ब्रेव. से माने बहुत साहसी थिले एंड वेरी पीस लविंग. कलिंग रो लोक माने सबले शांति प्रिय थिले, से माने शांति चाहुथिले. एंड कलिंग रो गोटे नौ बाहिनी थिला, नौ बाहिनी, वेरी स्ट्रांग नावल फोर्स. ओके, people travel to South East Asia, कोठी जाउथला इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा to sell their goods. Okay, so for that Chandragupta wanted to attack Kalinga and want to merge Kalinga with the Maurya Empire. This was the main reason. Okay, so आमे वर्तमान डिटेल्स को जिबा कलिंग वार विषय रे डिटेल्स पढिबा. ओके, सो बर्तमान आम देखा कौन होता ना देखो कलिंग वाज ए मेजर इवेंट इन द लाइफ ऑफ अशोका. मु मेन पॉइंट गुड़ा खाली हाईलाइट करची. इट अकर्ड इन 261 BC. as all of you know, the Kalinga war occurred in 261 BC, 8 years after coronation. ए क्वेश्चन टाइप पड़े केते अशोकंकर कोरोनेशन परे केते वर्ष परे कलिंग वार हेतिला. कलिंग वाज ए पावरफुल किंगडम that had been independent of Magadha for many years. Earlier Kalinga was a part of Magadha. Ashoka's father Bindusar had not conquered Kalinga because he was too interested in wine and philosophy. Ashoka felt his duty to conquer Kalinga and unite with his empire. There was a very bloody and resulted in deaths of many people. I have told you lakhs of people died in this war. ओके, सो जिबा. सो कॉजेस ऑफ कलिंग वार कौन थिला कॉजेस? ओके, सो द फर्स्ट कॉज इज द मगध एम्पायर ड्यूरिंग अशोका सराउंडेड कलिंग इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ. ओके, कौन थिला फर्स्ट रीजन ना मगध जो एम्पायर थिला सेटा ड्यूरिंग अशोक कलिंग को सराउंड करथिला नॉर्थ, वेस्ट आउ साउथ रू. The existence of Kalinga on the border of Magadha was definitely a threat to the power and potentially to that. जति गोटे स्टेट पाखर आ गोटे स्टेट रोची, so it will be definitely threat to the power. So that was the main cause. Okay, so for that reason many smaller states submitted to Maurya rules at that time.
बहुत गुड़े छोट छोट राज्य थे जो मैंने कि मौर्य साम्राज्य सहित मिसी जाते, बट कलिंग डिड नॉट, कलिंग डिनाइड टू मर्ज विथ द मौर्य एम्पायर. So Kalinga resisted the external administration. This was the political cause. Okay, first factor, political cause. Okay, ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ next, economic cause କ'ଣ ଥିଲା? What was the economic factor that was the main cause of Kalinga? Kalinga has a flourished maritime network. Okay, କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟେ strengthened maritime network ଥିଲା. କୋଉଟାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ନା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ. कोटा कनेक्ट करथिला? फर्स्ट थिंग इज साउथ ईस्ट एशिया. ओके, आउ कौन ना श्रीलंका. ओके, एंड अदर रीजियंस. सो ओके, सो व्हाट हैपेंड ना कलिंग मोनोपोलाइज्ड द ओवरसी ट्रेड इन द इंडियन ओशन एंड गेन्ड भास्ट वेल्थ. कलिंगर गोटे मोनोपोली थिला. सेतेबेले कलिंग एकमात्र राज्य जे बहुत धन संपत्ति परिपूर्ण थिला. ओके, आउ मैरीटाइम नेटवर्क बहुत स्ट्रेंथन थिला. एटा कौन हला, एटा को जेतेबेले अशोक थिले से ही डिड नॉट लाइक दैट. ओके, एटा भी ताको मतलब कोठी ना कोठी ताको अग्रावेट कला. ओके, सो वर्तमान जीवा नेक्स्ट कॉज को कोटा होची that is commercial cause. कौन थिला commercial cause? in commerce कलिंग was a great rival of मगध. कॉमर्स रे कलिंग बहुत आगर थिला जोटा कि मगध को निजर शत्रु भाव में परिणत करता. दैट इज ए कंपटीशन. सो इंपोर्टेंट ट्रेड रूट्स फ्रॉम द गैंगेटिक वैली टू डेक्कन एंड फर्दर साउथ पास थ्रू कलिंग. मु तुम देखी दक्षिण पथ. ओके, सो से जो लाइन टा इंपोर्टेंट ट्रेड रूट टा सो सेटा कलिंग देकिना पास करबा पड़ुतला. सो कलिंग को फैसिलिटेट होता ट्रेड एंड कॉमर्स में, बट अदर मगध दैट वाज इन प्रॉब्लम. देयर वाज प्रॉब्लम इन ट्रेड एंड कॉमर्स. सो दैट वाज अनदर फैक्टर. ओके, जीवा बर्तमान रिलीजियस फैक्टर को. व्हाट वाज रिलीजियस फैक्टर? परहैप्स रिलीजन वाज ए पोटेंशियल फैक्टर फॉर अशोका's कलिंग इन्वाजन. व्हाई? बिकॉज कलिंग वार अशोक वाज डिवोट टू शिव बिफोर द कलिंग वार. शुणा जाउछि जे सो आमे नॉट क्लियर, बट बिफोर द कलिंग वार अशोक वाज ए डिवोट टू शिव. शिवं को भक्त थिले अशोक. दो इट इज डिफिकल्ट टू ascertain व्हाट वाज द प्रिवेलेंट form of religion in Kalinga with a tolerable degree of certainty, it can be stated that Buddhism and Brahmanism, that is Shaivism, prevailed in Kalinga. एटा तो जना अछि. Ashoka might have decided a way holy war against Kalinga to teach Buddhist a lesson. शुणा जाउछि कि अशोक आगरु शैव धर्म ग्रहण करथिले बिफोर द कलिंग वार, एवं से जेतेबेले कलिंग आक्रमण करी जेहेतु कलिंग रे प्रिवेलेंट थिले ब्राह्मणिज्म आ बुद्धिज्म थिला सेतेबेले. सो कलिंग आक्रमण करी से गोटे शिक्षा देवा पई चाहथिले. ओके, जेहेतु शिवं को डिवोट थिले सो बुद्धिस्ट मानको आक्रमण करी गोटे शिक्षा देवा पई चाहथिले. जिबा वर्तमान जिबा. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ कलिंग वार. कौन थिला कलिंग वार रो रिजल्ट? कलिंग वार तो हैला, तापर तार रिजल्ट कौन हैला? चेंज इन अशोकास माइंड. अशोकांकर मनर परिवर्तन हैला. कौन पई? अशोका वाज डीपली रिमोर्सफुल ऑफ द सफरिंग कॉज्ड बाय द वॉर. ही वाज वेरी मच अफेक्टेड बाय द सफरिंग्स ऑफ द पीपल. लोक मानकर एतार दृश्य अवस्था देखी से मर्माहत होई पड़ले. ही बिकेम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. तापर से कौन कले ना बौद्ध धर्म ग्रहण करछन्ति परवर्ती मुहूर्त रे, एंड अडॉप्टेड ए मोर पीसफुल एंड बेनिवोलेंट रूल. बेनिवोलेंट माने दयालु. से तापर दयालु राजा भावे निजको उपस्थापित करछन्ति. ही प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म थ्रू आउट हिज एम्पायर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. से कौन कले ना निज बुद्धिज्म को प्रमोट कले कोठी ना थ्रू आउट हिज एम्पायर तांका राज्य रे एवं बाहर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विश्वर अन्य प्रांतर मध्य बुद्धिज्म को प्रमोट कले. देखिबा कोन हेछि ग्रोथ ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. केमिति आफ्टर द कलिंग वार आर्ट आर्किटेक्चर और लिटरेचर पर कोन इंपैक्ट पड़िछि? द कलिंग वार लेड टू ए पीरियड ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक एंड कल्चरल अचीवमेंट इन द मौर्य एम्पायर. ओके,
Ashoka commissioned the construction of many stupa, बहुत सारा स्तूप कंस्ट्रक्ट कले, monuments, okay, and use Pali as a common language, ଏବଂ ପାଲି ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ common language ଭାବରେ ସେ ରଖିଲେ. This helped to unify the empire and spread Buddhist ideas. Okay. Completion of Magadhan imperialism. The annexion of Kalinga marked the completion of Magadh's imperialism. Okay. Kalinga became the fifth province of the empire and Ashoka ruled it with love and affection. This showed that Ashoka changed from conqueror to benevolent ruler. Okay. गोटे विजेतारू से गोटे दयालु रूलर शासक भाव में परिगणित हेले. जो नेक्स्ट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अशोकस चेंज. कौन पाई अशोक चेंज हेले? अशोक ऑफन प्लेड पोर्ट्रेट एज ए पासिफिस्ट. पासिफिस्ट बहुत शांत लोक थे. टू रिनाउंस वायलेंस आफ्टर द कलिंग वार. कलिंग वार पर से वायलेंस जो हिंसा को परित्याग करते. बर्तमान देख कलिंग वार किपरि वायलेंस थिला, कौन पाई अशोक पासिफिस्ट हे गले. Look at this. Look at this. Such scenario. देखो किभଳି भावे दृश्य ही. How the people are lakhs of people are being killed. ये सब दृश्य अशोक को बहुत मर्माहत करिथिला. ओके. से एभଳି दृश्य देखि से ताकर जे भଳି गर्व तांकर जो हिंस्र भाव को परित्याग करथिले एवं ही बिकेम ए बेनिवोलेंट रूलर. से गोटे शांत रूलर भावे निजको उपस्थापित करथिले. लुक एट दिस. हाउ अशोका वाज चेंज्ड. देखो इनिशियली अशोका वाज ए दैट इज क्रूएल. ही वाज वेरी क्रूएल. ही वांटेड टू win Kalinga at any cost, okay, at the cost of lives of people of Kalinga. And later he became the follower of Buddhism. से बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण करथिले and became a pacifist ruler. माने बहुत शांत and benevolent, okay, दयालु. Look at this. Look at this Ashoka's transformation from a cruel, okay, king to a benevolent ruler. Okay, let us see. Ashoka's realism. Ashoka का वास्तववाद कौन था? Ashoka was a realist who knew that war was sometimes necessary. से जानी थे जी युद्ध बेले बेले दरकार. He may have been willing to use violence to achieve his goals. से हिंसार साहाय्य नहीं थिले तांकर गोल को बा तांकर जो लक्ष्य थिला पूर्ण करिया पई. But he also believed in the power of peace and compassion. अन्यर दुख को बुझिबा, शांत माने शांतिर वातावरण सृष्टि करिया मध्य से विश्वास करते. Ultimately it is of each individual to decide whether they believe Ashoka's change was genuine or not. Okay. So this is not clear consensus among the historians in this issue. तापर देखिबा. बर्तमान देखिबा एविडेंस ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट इन कलिंग. कौन थिला तांकर सब एविडेंस? फर्स्ट थिंग रॉक एडिक्ट 2 ऑफ अशोका. रॉक एडिक्ट 2 अशोका रे कौन थिला मेंशन? रॉक एडिक्ट जो थिला प्रस्तर खोदन हेतिला अशोकांगर. अशोका सज देयर वाज ए डेमोक्रेटिक सेटअप इन कलिंग. से कहले कि गोटे गणतंत्रवाद थिला कलिंग रे. ओके. नेक्स्ट कौन कहूची? द डिसीजन ऑफ अशोका नॉट टू कॉन्क्यूर द फ्रंटियर ऑफ कलिंग. Ashoka did not conquer the entire Kalinga and was satisfied with the conquest of coastal Kalinga, leaving the अताविका किंगडम इंटैक्ट. से कहले कि कलिंगर समग्र कलिंग को से विजय करबा चाहूनथले. से केवल कोस्टल कलिंग को अटैक करके ताको विजय करबा चाहूथले. दिस सजेस्ट दैट देयर आर अदर किंगडम्स और ट्राइबल एरियाज इन कलिंग दैट आर नॉट कॉन्क्यूर्ड बाय अशोका. से कहते कि आउरी केते ट्राइबल एरिया थिला कलिंग रे जोटा कि अशोका कॉन्क्यूर करि नथिले. दीज अदर किंगडम्स ऑफ ट्राइबल एरियाज मे हैव फॉर्म्ड ए कॉन्फिडेंट. छड़ा अशोका अप्लाइड Vedaniti, okay, Vedaniti to conquer the frontier Kalinga. He took the people of Attavika kingdom into confidence
and had secret pact with them and defeated the chiefs of coastal area and did not invade the territory of the tribal groups of the Otaveka kingdom. एगुड़ा सब बिलीव करा जाए. ओके, सो नॉट क्लियर कट एविडेंस आर किसी नहीं. रॉक एडिक्ट 13 वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सो रॉक एडिक्ट 13 रू क्वेश्चन आसीपारे. सो रॉक एडिक्ट 13 shows the absence of Kalinga's king's name. कलिंगर किंग रो ना किछि कोठी लेखा हैनी. ओके, which suggests that they might have a government known as Sangha which contains multiple rulers suggesting a democratic system. से कहूँ कि गोटे गवर्नमेंट सिस्टम थिबो सेठी कौन होती गोटे संघ ताको कहती सेठी कौन होता मल्टीपल रूलर थे विभिन्न रूलर थे से स्पेसिफिक रूलर का ना कलिंगर कोठी मेंशन कराही. ओके, द प्रीवैलेंस ऑफ मोनार्की इन कलिंग. द महागोविंद सुतांत ऑफ दीघा निकाय very well describes Kalinga as one of the monarchical states with 6 other contemporary likes Ashoka, Avanti, Subira, Videha, Anga, Kasi. से कहते कलिंग गोटे मोनार्की थिला. ओके, जीवा नेक्स्ट. मोनार्की कौन कौन माने थिला एविडेंस. प्लिनिन्स कर डिस्क्रिप्शन गोटे थिला. ओके, कि पावरफुल आर्मी गोटे कलिंगर थिला बोली. रघुवंशम कालिदास रघुवंशम कहुचे जे address the king of Kalinga as Mahabodhipati lord of Asen. अर्थशास्त्र कोटिनकर अर्थशास्त्र कौच who doesn't mention any form of government other than monarchy in Kalinga. रॉक एडिक्ट 13 कौन कहूली. The fact that Ashoka did not mention the name of Kalinga in the rock kings of Kalinga. कलिंगर ना कोटी मेंशन हैनी रॉक एडिक्ट 13 रे. अच्छा, गोटे कारुबाकी एनेक्डोट अच्छी. अच्छा, कारुबाकी एनेक्डोट कौन ना suggests that the king Kalinga had a son who wanted to marry her. King of Kalinga had a son who wanted to marry her. कारुबाकी जन थिले युवती तांको कलिंग का राजा मैरिज करने पे चाहूले. ओके, से टाइम चंद्रगुप्त मध्यम तांको मैरिज करने पे चाहूले. सो फॉर दैट रीजन कलिंग वार होते पारे. हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन कौन कहूची. खाराबळस हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन व्हिच मेंशन दैट he brought back Kalinga Jina from Magadha suggests that Jainism was the religion of the state in Kalinga before Kharavela. Okay, Kharavela time रे पूर्वरु कौन कहला Jainism was the religion of Kalinga. Jainism थिला Kalinga religion. So आमे देखिबा conclusion कौन कहूची. It is difficult to ensure that the government is democratic or monarchical. आमे कहि परिबानी सेतेबेले कलिंगर शासन डेमोक्रेटिक थिला कि मोनार्की थिला. But based on most of the evidence, Kalinga was likely ruled by the king of monarchy during Ashoka's time. Ashoka time monarchy thila. Okay. So एतिक थिला कलिंग वार. आउ किछि एते किछि इंपोर्टेंट जिंस नाही. आमे कोन करबा ना ई छोट छोट कांसेप्ट को नै कि जतोल एमसीक्यू करा जिवो सेते बेले आपण माने सब किछि आउ टिके क्लियर हे जिवे. ओके, सो कलिंग वार विषय तो बहुत कथा शुणा को मिले. तादर केते सत केते मिछ तो आम क्लीयर ने जानी नहीं. बट डिफरेंट सोर्सेस रु जहाँ मिलूँ से विषय में एनालिसिस कले. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड. शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट सेशन में विल बी डिस्कसिंग द एमसीक्यूज ऑफ कलिंग वार. टिके खाली ब्रीफ आइडिया नहीं जावा तापर एमसीक्यू कले you will get a better understanding. So thank you so much. Thanks a lot. May God bless you.